Hello student, today we are talk about the ICT most important topic, memory types and more, email, web version, software types, web browser, search engine and number system. So let's start. First we are talk about the memory in computer. कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है. कंप्यूटर मेमोरी two types, primary and secondary. Primary memory, RAM and ROM. RAM was volatile and ROM was not volatile, ठीक है. RAM was two types, SRAM and DRAM, and ROM was two types, PROM, EPROM and double EPROM. ठीक है. Secondary memory, HDD, SSD, compact disk, floppy disk and magnetic disk tape. These are example of secondary memory. ठीक है. DRAM stands for dynamic RAM, is made for the capacitor or transistor and must be refreshed every 10 to 100 milliseconds. It is slower and cheaper than the SRAM. ठीक है. SRAM was static RAM, has a 6 transistor circuit in each cell and retains data until the power up. It is also made of the flip-flop 1-bit memory stored in one time. ठीक है. And in NVRAM, non-volatile stands for non-volatile RAM, retains its data even when turned off, for example flash memory. MRAM stands for magnetic RAM and it is non-volatile in nature. And VRAM, video RAM, it is a part of the dynamic RAM and volatile in nature. ठीक है. ये वो देख सकते हैं. ठीक है. मदरबोर्ड, a CD can store up to 700 MB data, megabyte data. ठीक है. A single layer DVD 4.7 GB of data and double layer disk hold 8.5 GB. ठीक है. And single layer Blu-ray disc stored 25 to 33 GB data and equal layer of the Blu-ray disc can store, quad layer of the Blu-ray disc can be stored up to 180 to 128 GB data. The consist of the size makes it possible for Blu-ray disc or Blu-ray drive to support the DVD and CD and for the DVD drive and support the CD. यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं. लोएस्ट टू द हाईएस्ट क्रोनोलॉजी पर भी आ सकता है. ठीक है. नंबर 1 CD, नंबर 2 CD, नंबर 1 CD-ROM, नंबर 2 DVD-ROM एंड नंबर 3 Blu-ray disc. ठीक है. लोएस्ट टू हाईएस्ट. Next, memory. System bus. What is system bus? Prime objective of data bus is transmitted all data and instructions as well as it sends the address location that aware of the CPU, where in the main memory all data instructions are received from where the process data should be served. And external bus, it is a communication medium in between the main data bus and system board. ठीक है. And internal bus, this is a type of the data bus makes the connection between the all internal components of the processor and motherboard. ठीक है. And address line is a design to identify the appropriate location in memory unit where the data is presented. And register is known as the accumulator. It works as the temporary storage location where the data is coming from the main memory side for execution and move it for storing. यहाँ पर आप लोग टेबल देख सकते हैं. ठीक है. रजिस्टर, उसके बाद कैचे, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी. ठीक है. डिस्क स्टोरेज, नेटवर्क स्टोरेज एंड मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल स्टोरेज.
ये भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 1 bit is equal to unit of binary digit, stands for binary digit, ठीक है। 1 nibble is equal to 4 bits and 1 byte is equal to 8 bits। 1 kb or kilobytes is equal to 1024 bytes, ठीक है। 2 to the power 10 bytes। 1 MB और megabyte 1024 kb, ठीक है। इस तरह के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग और भी देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ए कंप्यूटर हैज मेन मेमोरी ऑफ 960 किलोबाइट्स। व्हाट इज द exact number of the bytes contained in the memory? Number 3 was the right answer, 960 into 1024, ठीक है। ईमेल ऐप देख सकते हैं, ठीक है। जीमेल ऐप से फॉर द विंडोज, इनबॉक्स बाय द जीमेल, फ्रीवायर, मेलबर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रॉपर्टी, ईएम क्लाइंट एटसेट्रा, ठीक है। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर देख सकते हैं यहाँ पर, एप्पल मेल प्रोप्राइटरी, स्पार्क, फ्रीवायर, एयरमेल प्रोप्राइटरी, इस तरह के एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। The first email was sent by Ray Tomlinson 1971. Tomlinson sent the email to himself as a test email message and containing the text something to be, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। QWERTYUIOP, ठीक है। However, despite the sending the email to himself, the email message is still transmitted through ARPANET, ठीक है। इस तरह के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वेबमेल एंड ईमेल क्लाइंट के बारे में भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। वेब वेब के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। वेब वर्जन 1 मोस्टली रीड ओनली, वेब वर्जन 2 वाइडली रीड एंड राइट, एंड वेब वर्जन 3.0 पोर्टेबल एंड पर्सनल, ठीक है। वेब 1.0 होम पेज, वेब 2.0 ब्लॉग और विकीज, एंड वेब 3.0 लाइव स्ट्रीम और वेब, ठीक है। इस तरह के आप लोग देख सकते हैं। वेब फॉर्म्स, वेब वेब 1, वेब 2.0 वेब एप्लीकेशन, वेब 3.0 स्मार्ट एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरह के देख सकते हैं आप लोग। HTML पोर्टल्स, ये वेब 1.0 का एग्जांपल है। वेब 2.0 का एग्जांपल XML, RSS, एंड वेब 3.0 RDF, RDFS, OWL एटसेट्रा, एंड वेब 1.0 बिटानिका ऑनलाइन, वेब 2.0 विकिपीडिया, वेब 3.0 सिमेट्रिक वेब फॉर द एग्जांपल, ठीक है। Open source software. Open source software is a which the source code is available along with the software and right to the view, modify and enhance this code, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप लोग। And furthermore, no license is required for the software. Software can be cost free or chargeable. User can also share the software without any license violating, ठीक है। For example, Android, Linux, Apache Server, Leon, Lonic etc. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, एंड्रॉयड एंड वेब सर्वर, Apache HTTP सर्वर, Apache Tomcat, Lightpod, Node.js etc. and database system MySQL and SQLite, Apache Hive, HIV and HIVE and MariaDB etc. and mobile development framework Icon, React Native, Flutter etc.
इस तरह का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिस ऑफ द सॉफ्टवेयर स्वीट, एवरेज ऑफ द ओपन द ऑफिस एंड लिबर्टी ऑफिस etc, ठीक है। freeware, what is freeware? Freeware software user can be use the software without any cost. It does not mean the source code is available along with the software, ठीक है। user cannot be distributed this software, this source code is closed, ठीक है। source code are not available. For example, Adobe PDF, Yahoo Messenger, Google Talk, MSN Messenger etc, फ्रीवेयर का एग्जांपल है, ठीक है। लाइक द Adobe, Yahoo Messenger, Google Talk, ठीक है, इस तरह की PLC player, Skype etc, and shareware. What is shareware software? It is available for free of cost but only up to the certain time limit, ठीक है। Furthermore, use after the time limit are over, the user has to pay the money to use the software, ठीक है। For example, WinZip, Adobe Acrobat, 8 Professionals and GetRight etc. And proprietary software, what is it? It is a software that is available only after buying the proper license of the software, ठीक है। Only the owner has to write the change or sell the software, and owner can be individual developer or organize the close the source, ठीक है। इसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर आर द कमर्शियल सॉफ्टवेयर, इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नॉर्टन, बीट डिफेंडर, मैकफ्री etc, ठीक है। व्हाट इज एडवेयर? एडवेयर स्टैंड फॉर एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर. This software basically display the advertisement to earn the revenue for the developer, ठीक है। Moreover, we can say that they are usually displayed unwanted advertisement, ठीक है। For example, AdBlock Plus, Skype, Firewall, Approach, Diskad, Gator etc. Creepware, what is creepware? This is a software provide the only certain number of the features until the user does not purchase the full version of the software, ठीक है। Trial. What is trial? Trial software, in the software the user can be use all the features of the software within the time, ठीक है। It provide the full users of the right know the software fully. After the trial gets over, the user can either use only certain features creepable or the whole software is deactivated, ठीक है। Donationware, what is donationware? It is a types of the software that provide the full featured version of the user and request to user to pay the optional payment, optional amount, ठीक है। And Nagaward, what is Nagaward? Software is continuously remind the user to pay for the software. It was they continuously display alert message or a dialog box either as starting the software or while using application, ठीक है। Freeware, what is premium? What is premium? This is a software provide the full featured version of the software, ठीक है। Same time the users to pay has pay the amount of the premium version. The premium version of the software contains some advanced features of the software, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। Which of the following is a search engine? Option number 4 was the right answer, Google, ठीक है। यहाँ पर वेब ब्राउजर के बारे में देख सकते हैं, लाइक द ओपेरा ब्राउजर, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर was invented in 1990s, Tim Berners-Lee, ठीक है। Rename his browser was called the World Wide Web and later renamed Nexus, ठीक है। The world's first popular browser, Mosix 1993 and Netscape 1994। सर्च इंजन के बारे में देख सकते हैं आप लोग, Ask, Yahoo, Google, DuckDuckGo
etc. and being etc. are the example of search engine. ठीक है. Web crawler is mainly used to create a copy of all the visited page for later proceeding by search engine that will index and download the page to provide the faster searches. ठीक है. Most well known crawler is Google bot. ठीक है. For example, Bing bot, Slurp bot, DuckDuck bot, etc. First search engine was Archie. ठीक है. The most significant web search engine to arrive were Alta Vista. ठीक है. Web crawler was 1994 of all still surviving search engine. ठीक है. Web crawler is two oldest. Today it aggregate the result from Google and Yahoo. ठीक है. फर्स्ट वेब ब्राउजर ये देख सकते हैं आप लोग. ठीक है. एंड लास्टली नंबर सिस्टम. यहाँ पर डेसिमल नंबर का जो एग्जांपल है कंटिन्यू काउंटिंग द यूजिंग द फिंगर बेस 10 0 to 9. ठीक है. डेसिमल नंबर 0 to 9 बेस 10 है इसका. एंड बाइनरी का जो बेस है बेस 2. ठीक है. फॉर कंप्यूटर सिंस फ्लिप फ्लॉप स्टोर आइदर 0 और 1. इसका जो बेस है 2 0 और 1. ठीक है. एंड ऑक्टल शॉर्ट एंड लॉन्ग बाइनरी नंबर बेस 8 0 to 7. ठीक है. एंड हेक्साडेसिमल सिंस द डेटा इज शॉर्टेड stored in bytes बेस होती है 16. इसका जो बेस है 16 हेक्साडेसिमल का 0 to 9 A and F. ठीक है. A to F. तो डन. इस तरह के वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर माय वीडियो.